In the theory of structures, one basically is designed in a way like we have to do the analysis of statically determinate structures. Statically determinate structures analysis means, for example, the analysis of the trusses and by using different methods, and then the calculation of reflections and influence line diagram, and then cables and arches. So this is the quick overview of the subject which we will uh, do during the theory time. So the first lecture is about the introduction, in which all the introduction of all the types of structures. So I am sharing that lecture number 1, that is the introduction. So now I am sharing the now you can see the lecture. You can now you can see the slides. Yes, sir. Yes, sir. Yes, yes. So in the very first, like, this is all about the introduction and history of structural engineering, forms of structures, materials, and load. So actually, what? So this is the schematic diagram of the structural engineering subjects that you will study and you have studied during the uh, total 4 years program. In the first year, you have studied already the engineering mechanics, and in second year you will study the theory of structures 1, and third year theory of structures 2, and the fourth year structural engineering. So currently we are studying in second year theory of structures 1. So basically this in this lecture all the things are introductory. For example, the history of structures, invention of modern era, and then different forms of structures. So we will go through that. That is, you can say this is not too much technical to learn about, just introduction. Why history is important? That's definitely why history is important, because it has the past has value to our society. is the narrative of mankind कि किस तरह आपके जो है पहले जो दौर में लोग होते थे, वो किस तरह रहते थे, उनका क्या जो है वो स्ट्रक्चर होता था, किस टाइप के स्ट्रक्चर्स में रहते थे, क्या लाइफ स्टाइल होता था। दैट्स द नरेटिव ऑफ मैनकाइंड। और जब हिस्ट्री प्रॉपरली प्रेजेंट की जाती है तो देन लेंड्स इटसेल्फ टू क्रिटिकल एनालिसिस। मतलब अगर आप प्रॉपर हिस्ट्री से कोई सबक सीखें या उससे कोई नई इन्वेंशन लेके आएँ, तो देन वी इनोवेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ materials, and then for the betterment and use of the mankind. So ओल्ड एरा में हमारे पास ग्रीक एंड इजिप्शियन टेम्पल्स होते थे, ठीक है। वो अभी भी आप अगर ओल्ड बिल्डिंग्स देखें, पाकिस्तान में भी बहुत पुराने खंडरात हैं। इसके अलावा बाहर अगर अब्रॉड में देखें तो यूरोप वगैरह में या इजिप्शियन जो है इधर आपको ये टेम्पल्स वगैरह या और भी चर्चेज या टेम्पल्स की बिल्डिंग्स बहुत ओल्ड हैं, मतलब 200 400 600 ईयर्स ओल्ड बिल्डिंग्स होती हैं। सो नॉर्मली दोज बिल्डिंग्स दैट वर बिफोर द इन्वेंशन ऑफ द स्टील एंड द सीमेंट। सो नॉर्मली उसमें स्टोन से बनी होती थी, एम्प्लॉयड बीम्स एंड कॉलम्स एंड लिटल स्पेसेस बिटवीन देम, मतलब बहुत कंजेस्टेड सी होती थी। यू कैन सी द फिगर्स इन द नेक्स्ट स्लाइड लाइक दिस। सो दीज आर द डिफरेंट, you know already about these buildings, also written on the slides as well. So that is an informative part. Arch structures were discovered prior to Roman area. Roman empires used arches extensively in constructions. Arches are those type of structures in which they can span a little bit more as compared to beams, because in arches normally we don't require the reinforcement, ठीक है। उसकी ज्योमेट्री ऐसी होती है कि उसमें कंप्रेसिव फोर्सेस होती हैं। वी विल स्टडी दोज ऑल टेक्निकल डिटेल्स व्हेन
we will study the arches chapter, but from this point of view मतलब उसमें ये कि arches में हमें reinforcement की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसलिए ओल्ड बिल्डिंग्स में आपको आर्चेज नजर आएंगी। आर्चेज में स्टोन्स की ऐसी अरेंजमेंट और ज्योमेट्री होती है कि ईच एंड एवरी स्टोन इज कंप्रेसिंग ईच अदर, दैट्स द कंप्रेसिव फोर्सेस आर इन आर्चेज। सो स्टोन आर्चेज हैड ए स्पैन ऑफ 100 feet and more. क्लोजियम है, दैट इज द वन ऑफ द मोर डिस्टिंक्टिव लैंडमार्क। ये आप सबको इसका एम्फी थिएटर है, एंड ये आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी, दैट इज़ अ वेरी डिस्टिंक्टिव लैंडमार्क, ठीक है, इन रोम्स। आर्चेज हैं, ये देखें, ये डिफरेंट एग्जांपल ऑफ आर्चेज ऑफ फिगर्स यू कैन सी। एक्वीडक्ट होता है बेसिकली, एक्वीडक्ट वो चीज़ होती है दैट इज़ यूज टू कैरी वाटर, ठीक है। तो उसने जस्ट इसको पॉइंट आउट किया है कि जस्ट ही हैज़ पॉइंटेड आउट लेट मी शो यू। pointer options, man, you can see my pointer as well. Yes, sir. ये देखें, सो दिस इज एक्वीडक्ट, ये जो मैं रेड कलर का पॉइंटर है ना, दैट एक्वीडक्ट इज यूज टू कैरी द वाटर, ठीक है। जस्ट उसने यहाँ इसको नेम किया हुआ है। सो ये एक और आर्च है पुराने कॉन्स्टेंटिनो बिल्ट इन टू। So from AD 500 to AD 1500, structures that were built continue to imply the stone arches as a major structural forms. Gothic cathedrals जो है वो चर्चेस कहा जाता है। Roof was supported by flying buttress. So basically these are the you also have seen the churches like this, ठीक है, but in Pakistan you don't see too much old churches. So but in Europe and all other countries you may see the churches which are very old. So these are this is a typical old example of an Gothic cathedral church, ठीक है। इसमें ये फ्लाइंग बटर्स जो है ना, बेसिकली फ्लाइंग बटर्स इज दैट थिंग दैट इज पॉइंटेड इन अ पिंक कलर एरो हेड लाइक दिस। इन फ्लाइंग बटर्स बेसिकली इसका पर्पस क्या होता है, दैट इज बेसिकली गिव अ literal support to the roof and the walls. This is known as flying buttress, ठीक है। रूफ ट्रस की बनी होती है, so that is known as a flying buttress, the literal support। आर्च रिब्स की तरह सी होती है, ठीक है। दैट इज अ फ्लाइंग, यू कैन सी बेटर इन दिस इज अ फ्लाइंग बटरस। So this is a typical type of arch structure that you normally see in churches or Gothic cathedrals. 15th and 16th centuries are known as Renaissance, age of revolutions, Renaissance को बोलते हैं। गैलीलियो ने इस उसमें जो है वो कंसेप्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट्स दिया था। रॉबर्ट हुक्स लॉ ने लॉ ऑफ लीनियर बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स पेश किया था। सर आइजैक न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, and these are the dates in which they have proposed the laws. Euler's ने buckling of columns की theory पेश की थी, that you will study as well, not here but you will study in steels and theory of structures too. Euler's buckling of columns. Palladio, basically that is important. Palladio has introduced the use of trusses, that we will study here in too much details. Palladio was the man who introduced the introduction of trusses, ठीक है। So these are the modern era modern era उसको बोलते हैं जब introduction of iron, industrial revolution, and so these are the different names of the bridges which are made up of steel after the invention of the steel, ठीक है। so Thomas Telford bridge है, ये different bridges and then the structures सर with the स्क्रीन स्टक हुई है सर, है स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, अच्छा पहले तो हो रही थी, अब हो रही, जी सर अब हो रही है सर। अब हो रही, ठीक। सो कहाँ से नहीं शेयर हो रही थी,
यहाँ से so Palladio has introduced the use of trusses. Are the names of those different scientists or the pictures. The different bridges हैं जो steel के bridges हैं. That is an informative thing. You can also. So these are the different types of buildings in terms of heights. Burj Dubai, you know. Now they are building the tallest building. That is the name. I don't exactly the name, but that is in Saudi Arabia, Jeddah. Okay, that is not completed yet, but that will be the tallest. These are the tallest buildings: Taipei, Burj Dubai, Petronas Tower, Shears Tower, Chicago, Jinmao Building, Shanghai. फॉर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर्स में क्या होता है बेसिकली? द फॉर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर्स में केबल्स हैं, आर्चेज हैं, ट्रसेस हैं, बीम्स हैं, एंड देन सर्फेसेस आर वेरी थिन मेम्ब्रेन्स. सर्फेसेस में डिफरेंट टाइप्स हैं, प्लेट्स हैं, शेल्स हैं और मेम्ब्रेन्स हैं. सो cables, you also have seen cable suspension bridges, and very famous example of the cable suspension bridge is the Golden Gate, that is in San Francisco, USA. ठीक है. cables are the structures light weight होती हैं, they can be crisscross and they are pure tension members. ठीक है. So you have seen many types of cable structures. cable suspension bridges भी होते हैं, cable suspension roofs भी होती हैं. cables जो हैं वो as you can be used as a guys or antennas or transmission lines. ठीक है. You have seen the transmission lines of electricity. These are made up of these structures are known as cables. So whenever the load is applied on cables, it takes tension always. An arch you have, arch is a structure in which there are only compressive forces. आर्चेज में टेंशन नहीं होती, केबल में कंप्रेशन नहीं होती. ठीक है. आर्च आर प्योर कंप्रेशन मेंबर्स, केबल्स आर प्योर टेंशन मेंबर्स. ठीक है. You have seen many examples in daily life. You can see the example of arches. ठीक है. We have different types of arches depending upon the shapes. ठीक है. वो भी next slides में we will study those different types. Trusses क्या होते हैं? Trusses are this form of structure in which all the members are arranged in a triangular fashion. The simplest form of the truss is a simple triangle. ठीक है. But triangle होना must है trusses के लिए. So we will study those technical details of trusses when we will start analyzing the truss and product. But from the definition point of view, truss is a form of structure in which all the members are arranged in a triangular manner. ठीक है. ट्रायंगुलर वे. उसमें ये होता है कि द मिनिमम नंबर ऑफ truss कैन बी 3. ठीक है. The minimum number can be 3. So all the members are of the truss can have the axial forces. उसमें या टेंशन होती है या कंप्रेशन होती है. ठीक है. So there are different assumptions which we will do while analyzing the truss. Beams are horizontal members which are used to carry the gravity loads. You have seen many examples of beams. Surfaces में membranes हैं, plates हैं, shells हैं. ठीक है. केबल स्ट्रेच वेल एंड ऑल राइट. ये डेफिनेशंस हैं और डिफरेंट एग्जांपल्स हैं. तो ये दिस इज द केबल सस्पेंशन रूफ. कुछ ऐसी रूफ्स होती हैं जिसमें केबल सस्पेंशन रूफ्स होती हैं, एंड दीज आर मेड अप ऑफ टेंसाइल फैब्रिक शीट्स. ठीक है. या किसी भी चीज़ की जिसमें आपके पास नीचे जो है वो एम्ब्रेला टाइप का स्ट्रक्चर होता है और उसके ऊपर उसकी एक शीट होती है, बट दैट इज नोन एज केबल सस्पेंशन roofs. So this is the example of cable suspension roof. ये जॉर्जिया डोम है, ये भी एग्जांपल ऑफ केबल सस्पेंशन रूफ है. केबल सस्पेंशन ब्रिज की द मोस्ट prominent example, the most known example is the Golden Gate Bridge, that is in San Francisco.
So in this you can see all the components of the bridge are labeled. ठीक है, ये केबल जो है that is the main load carrying cable. You know, whenever the load is applied, it will take the form of a quaternary curve. There you see the load applied, so it has the shape of a curved cable. So the main load carrying element is the cable. If the cable fails, the structure will fail. This is another example of cable suspension bridge. So you will not see the cable suspension bridges in Pakistan. I don't think so. These are the cable suspension bridges are there, but they are very, not on a very heavy scale. These pedestrian हो सकते हैं, or sometimes a little bit not for the heavy traffic and all that, like the Golden Gate Bridge. You will not see the examples. So an arch is a curved structure capable of spanning a space while significant weight, a doorway and a stone wall. अक्सर आपने स्टोन की आर्चेस डोर के ऊपर देखी होंगी. Arch is significant because in theory at least provides a structure which limits stresses. I told you, so the only stresses are the compressive stresses. So these are the different types of arches practically. So depending upon the shape of the arch, so we have different types of arches. You can see triangular arch, round arch, segmental arch. These all depends on the shape. At least you should know the known shapes like shoulder flat arch, equilateral pointed arch. So these all depends on the shapes. Okay, three-foiled cusped arch, horseshoe means horseshoe की shape की होती है. Three center elliptical arch, inflexed arch, augie arch, reverse augie arch, Tudor arch, parabolic arch. So these are different shapes depending different types of arch depending upon the shapes of the arches. So you don't need to exactly memorize those shapes, but at least unknown shapes like parabolic arch, ठीक है, या horseshoe arch. So at least you should recognize the shape of the arch when the shape is given कि ये which type of arch is this. ठीक है, so it's not that much important. Truss क्या है? In architecture and structural engineering, a truss is a structure comprising one or more triangular units constructed with straight slender members whose ends are connected at joints. A plane truss is the one where all the members or joints lie within two-dimensional plane, where a space truss has members and joints sections in 3 dimensions. तो ट्रस क्या होती है? जिस बेसिक मैंने आपको बताया, स्ट्रेट सिलेंडर मेंबर से मिलके बनी होती है, विच इज़ a simplest form of the triangle is known as simple truss. ठीक है, simple triangle is a simple truss. So that is a truss. All the members are assumed in axial compression or tensions. So whether there is a tension or compression in truss members. Members are joined with the help of frictionless pins. There is assumptions when we do the analysis of trusses. So all the members are joined through frictionless pins. Loads are applied at joints only. ठीक है, whenever we apply the loads applied on joints. So there are different types of trusses. We have different types, but here very less types are defined here. The common truss it is characterized by a triangular shape. It is most often used in roof construction. Flat truss होती है, it gets its name from its parallel top and bottom gutter. Truss का जो top वाला member है अगर वो flat होगा, ठीक है, that is a flat truss, and that is often used in roof construction. Floor construction, yeah, where we need a flat surface required. Truncated means कटा हुआ. Combination of two is flat और common का truncated जो है, that is known as combination of the two trusses is known as truncated truss. Is used in hip roof construction. You have seen the hip roof construction in for construction of the house of the roof, where there is a slope in all the 4 directions. Okay, you can see different figures of the hip roof where the slope is in all the 4 directions. Okay, that is known as hip roof. So this is the example of a bridge, and beams is a structure that eliminates the load. Sorry, beam is a structural element that carries the load primarily in bending. ठीक है, basically beams and frames are basically bending elements हैं. इनमें जो load है वो gravitation load होता है, और whenever the load is applied and then the beam has the bending. ठीक है,
बीम नॉर्मली बेंडिंग में फेल होती है, लोड अप्लाई होगा उसमें बेंडिंग आएगी, ठीक है। बीम generally carries vertical gravitational force but can also be used to carry the horizontal loads due to earthquake or wind load. Loads carried by a beam are transferred to columns, walls, and girders, then transferred to the force to the adjacent members. It requires only vertical supports. Beam की जो supports हैं वो these are only vertical supports. It is a compact structure. Its disadvantage is that it sometimes uses materials less economically than other structure system. मतलब समटाइम्स अगर आपने कोई स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना है, सपोज कोई रूफ डिज़ाइन कर रहे हैं या कोई फ्लोर डिज़ाइन कर रहे हैं और उसमें आप अगर बीम से उसकी सपोर्टिंग करें, समटाइम्स इट बिकम्स लेस इकोनॉमिकल। मतलब ये भी हो सकता है कि आप उसकी जगह ट्रस डिज़ाइन करते हैं तो दैट बिकम्स मोर इकोनॉमिकल एज कंपेयर टू द बीम्स। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन। क्या क्या है? हेलो, करके कल जमा करा के इम्प्रूव यार हम तो कोई बात नहीं करते। आज दाऊद ने बात की, कसम से मुझे मैं मारूंगा। वैसे यार आप पहले कसम से बदलो, वो बड़ा कपटी उस बंदे को बदलो, मैं मारूंगा। कुछ ऐसी का बंदा बनाओ। मैं बैठा हुआ, मैं समय साल के लिए शुरुआत है। ताला नहीं लगाया, ताला लगा था, चाबी में उठा लाया था। मैंने कहा चाबी नहीं होगी इसलिए मैंने यार बोला कोई भी नहीं है हॉस्टल में इस टाइम। भाई तो आवाज़ आ रही है थोड़ी सी, म्यूट करें, शोर की आवाज़ आ रही है, और खामोशी से लेक्चर सुने, ठीक है। हाँ, आपस में बातें नहीं करें। Its disadvantage is that it sometimes uses material less economically than other structural systems, ठीक है जी। उसमें जो है वो ये उसका डिसएडवांटेज है बीम का। सो दीज आर सर्फेसिस में हमारे पास मेम्ब्रेन्स आ जाती हैं। मेम्ब्रेन्स यू कैन आल्सो सी डिफरेंट एग्जांपल इन डेली लाइफ ऑफ मेम्ब्रेन्स। थिन शीट्स ऑफ मटेरियल होते हैं जिसमें बैलून्स होते हैं, सेल्स होते हैं, टेंट्स होते हैं, एंड दे आल्सो रेजिस्ट अप्लाइड बाय लोड बाय टेंशन। प्लेट्स क्या होती हैं? दीज आर दी सर्फेसिस दैट ट्रांसफर लोड्स बेंडिंग इन अ सिमिलर मैनर टू बीम्स। प्लेट्स होती हैं बेसिकली वो स्लैब्स होती हैं जो इन पे लोड कॉलम पे ट्रांसफर स्लैब्स का विदाउट दी बीम्स होती है, दैट इज नोन एज प्लेट्स, ठीक है। समटाइम्स ये आपने अपने सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में देखें, आपकी स्लैब का लोड बीम से कॉलम पे आ रहा है, ठीक है, दैट इज अ फ्रेम स्ट्रक्चर। बट व्हेन द लोड ऑफ द slab is directly transferred to the column without the beams, that is known as plate, that slab is known as plate, ठीक है। Shells is a rigid structures that transfer loads in two directions. The primary difference between the shell and the plate is that shell has a curvature where the plate does not, ठीक है। सेम प्रिंसिपल है एज दी प्लेट, बट ये कर्व टाइप्स की जो रूफ होती है, दीज आर रिजिड स्ट्रक्चर्स इन मेड ऑफ कंक्रीट, ठीक है। सो दैट इज नोन एज दी रिजिड शेल्स। So the example you can, JFK airport है, international airport है, that is the example of the shell. So you can also see the different examples in daily life. But materials, properties of material strength है और basic है strength और deformation characteristics. Strength जो है materials की, that is very important property, कि वो material कितना strong है up to in tension और compression, ठीक है। एंड स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किसी मटेरियल की स्ट्रेंथ ज़्यादा है और वेट कम है, सो दैट इज़ द बेस्ट मटेरियल, ठीक है। लेकिन अगर स्ट्रेंथ ज़्यादा है और वेट बहुत ज़्यादा है तो दैट कैन नॉट बी कॉल्ड एज ए बेस्ट मटेरियल, बिकॉज जब आपके पास लोड ज़्यादा होता है तो सेल्फ वेट आपका स्ट्रक्चर का बढ़ जाता है, ठीक है। तो सो द टू इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स आर फ्रॉम स्ट्रेंथ पॉइंट ऑफ व्यू, टेंशन कंप्रेशन रेजिस्टेंस, कि वो कितनी इसकी टेंशन टेंसाइल रेजिस्टेंस है और कंप्रेशन रेजिस्टेंस है। फॉर एग्जांपल स्टील इज स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन, वीक इन टेंशन, sorry, strong in tension, weak in compression, whereas the concrete is strong in compression, weak in tension. So both have the different properties. So what we do, we combine steel and concrete, okay, to make a composite material that is known as RCC,
ठीक है। यस सर। सो डिफॉर्मेशन करेक्टरिस्टिक्स में हमारे पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं। स्टिफनेस क्या है? बेसिकली स्टिफनेस इज द actually you can say the extent to which an object resists deformation in response to an applied load or force। ठीक है। बेसिकली इसका कॉम्प्लीमेंट्री कंसेप्ट जो है दैट इज रिलेटेड फ्लेक्सिबिलिटी और प्लायबिलिटी। ठीक है, जितना स्टिफ होगा उतनी उसके अंदर डिफॉर्मेशन जो है प्रोड्यूस करना या उसमें इतनी ज़्यादा फोर्स रिक्वायर होगी। तो स्टिफनेस क्या है? बेसिकली the extent to which an object resists deformation in response to applied force। जिस तरह आपने स्प्रिंग्स की स्टिफनेस होती है, सपोज अगर आप देखें एग्जांपल्स तो जो बॉल पॉइंट का स्प्रिंग है वो उसकी स्टिफनेस कम है एज कम्पेयर टू द स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग दैट इज इन द शॉक एब्जॉर्बर ऑफ द कार। ठीक है, इस कार की शॉक की उसकी स्टिफनेस ज़्यादा है। ठीक है। सो इलास्टिसिटी क्या होती है? Can anybody tell what is elasticity? सर रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, कि वो कितना अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ सकता है, वो उसकी इलास्टिसिटी होती है। Yes, ठीक है। तो this is the extent to which an object can regain its original shape when the force that is known as elasticity। ठीक है। तो elasticity जो है वो एक स्टेट होती है इलास्टिक स्टेट। ठीक है ना। एक होती है प्लास्टिक स्टेट। बेसिकली इलास्टिसिटी की हम डेफिनेशन अगर करें तो उसको अब ऑब्जेक्ट की एबिलिटी है to resume its normal shape after that is being stretched and the load is removed। ठीक है। रबर है that is more elastic। स्टील है that is elastic up to some extent। ठीक है, up to some load that behaves elastically, but up to behind that load, so there will be a permanent deformation। there will be permanent deformation। ठीक है, behind that load and that goes into the plastic state। ठीक है, that goes into the plastic state। so we normally check the steel। you have also seen we have the machine in the department, so that also checks or measures the tensile strength of the steel। तो उसका जो ग्राफ बनता है ना स्टील का, तो अप टू सम एक्सटेंट सो देर इज अ लीनियर बिहेवियर। आपका लोड बढ़ रहा है, उसके अंदर उसकी स्ट्रेस और स्ट्रेन बढ़ रही है। स्ट्रेस स्ट्रेन के दरमियान एक ग्राफ होता है। तो लोड आप अप्लाई करते हैं, ठीक है, मशीन पे, तो उसके अंदर एक इलांगेशन आती है। ठीक है, एक टाइम ऐसा आता है उस लोड के ऊपर उसके अंदर परमानेंट डिफॉर्मेशन आने चाहिए, दैट इज नोन एज प्लास्टिक स्टेट। बट बिफोर गोइंग इनटू द प्लास्टिक स्टेट, तो कंक्रीट बिहेव्स अप टू सम एक्सटेंट इलास्टिकली। उसके अंदर आप लोड की रिमूवल करेंगे, परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं आएंगी। ठीक है, so that before the removal of before the permanent deformation that is known as elastic state। जब permanent deformations आ जाती हैं तो फिर उसके बाद स्टील के अंदर उसका क्रॉस सेक्शन थोड़ा सा थिन होने लग जाता है, उसके अंदर नेकिंग स्टार्ट होती है और नेकिंग के बाद वो ब्रेक हो जाता है। so if the material is that is known as elastic material, ब्रिटल नहीं होना चाहिए। ठीक है, स्टील को नेकिंग के साथ टूटे तो दैट इज ओके। if the steel breaks without producing the necking, that is dangerous। ठीक है, that is a more carbon content steel। ठीक है, so that is the steel should be elastic। the another property that is ductility। what is ductility? Can anybody tell what is ductility? So the property to mold a material into sheets। into sheets। ठीक है, नहीं sheets वाली तो और होती है, ये आप स्पेसिफिक बता दिए ना सर। वो malleable होती है, वो malleable the substance which has the ability to driven into wires।
is known as ductility. हाँ, ductility, ठीक है. That is ductility is a mechanical property commonly described as a material ability to drawn into thin wires, ठीक है. That is known as ductility. एक होती है malleability, ठीक है. Malleability is that the ability of material to that can be ability of material to regain the shapes of a thin sheets, that is known as malleability, ठीक है. सो स्टील जो है वो डक्टाइल भी है, ठीक है ना. तो और मैलेबल आपने देखा होगा अक्सर जो है वो थिन शीट्स में भी आप इसको वो कर सकते हैं, ठीक है. सो दिस इज द प्रॉपर्टी, these are all the three properties that are related to deformation characteristics. मटेरियल्स हैं हमारे पास एग्रीगेट, स्टील, कंक्रीट, वुड, एल्यूमिनियम, फाइबर, कंपोजिट मटेरियल्स दैट इज मेड अप ऑफ वन और टू मटेरियल्स. लोड्स में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड्स हैं, एक है स्टैटिक, एक है डायनामिक, लाइव और डेड लोड. सो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड. स्टैटिक लोड क्या होते हैं? जो स्टेशनरी लोड होते हैं, ठीक है, जो दैट the loads that does not change its magnitude and position with respect to time, that is known as static load or the dead load. And though the loads that changes its magnitude and position is known as dynamic load, ठीक है. सो फर्दर अगर आप इसको डिफाइन करें तो डेड और लाइव लोड. डेड लोड क्या होता है? द लोड दैट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड मैग्नीट्यूड, दैट इज नोन एज डेड लोड. एक चेयर है, ठीक है. आप कुछ टाइप ऑफ लोड होते हैं डेड लोड, दैट इज मूवेबल डेड लोड, जिसको हम मूव कर सकते हैं, वो भी डेड लोड क्लास. चेयर इज ए सॉर्ट ऑफ डेड लोड, ठीक है. कोई फिक्सचर्स हैं ऑफिस के अंदर, टेबल्स हैं या कोई भी ऐसे परमानेंट फिक्सचर्स हैं, दैट इज अ डेड लोड. फैंस हैं, डेड लोड है. या कोई भी लोड आपके बिल्डिंग के ऊपर लगा हुआ, दैट इज एग्जांपल ऑफ डेड लोड, ठीक है. सेल्फ वेट ऑफ द बीम इज आल्सो एग्जांपल ऑफ डेड लोड, ठीक है ना. कोई भी स्ट्रक्चर का सेल्फ वेट है, दैट इज एग्जांपल ऑफ, दैट इज द मेन डेड लोड. मेन आप कह लें कि पार्ट ऑफ द डेड लोड ऑफ द स्ट्रक्चर इज सेल्फ वेट. बाकी तो लोड इतना मैटर नहीं करता स्ट्रक्चर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. सो लाइव लोड क्या होता है? द लाइव लोड इज अ लोड विच चेंजेस इज मैग्नीट्यूड एंड पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सो लाइव लोड की डिफरेंट एग्जांपल्स हैं. बिल्डिंग के लिए लाइव लोड क्या है? फॉर एग्जांपल इफ वी आर द ह्यूमन बीइंग्स आर द लाइव लोड फॉर द बिल्डिंग्स, ठीक है. सो हमारी जो है लोकेशन चेंज हो जाती है, दैट्स व्हाई वी आर कॉल्ड एज ए लाइव लोड. सो दीज आर आल्सो कंसिडर्ड व्हाइल डिजाइनिंग द स्ट्रक्चर. सो लाइव लोड में हमारे पास डिफरेंट बिल्डिंग लाइव लोड्स में हमारे पास ऑक्यूपेंट्स आ गए, ब्रिज लाइव लोड्स में हमारे पास व्हीकल्स आ गई, ठीक है. अर्थक्वेक लोड्स में हमारे पास द अर्थक्वेक लोड इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ ए लाइव लोड. स्नो लोड इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ ए लाइव लोड. विंड लोड इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ लाइव लोड, ठीक है. So these are the loads that you will that can occur on a building, ठीक है. सो स्नो लोड जो होता है, फिर हर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशंस बनाते हैं हम डेड और लाइव लोड के. फैक्टर्ड लोड उसको आप बोलते हैं फॉर डिजाइनिंग द स्ट्रक्चर्स, ठीक है. उन कॉम्बिनेशंस को हम जो है देन फॉर डिजाइनिंग यूज करते हैं. सो हाउ वी विल कैलकुलेट द डेड लोड? तो वो हमारे पास डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं और उसके कॉम्बिनेशंस कैसे होते हैं. तो वी विल स्टडी दोस प्रॉब्लम्स एज वेल जब हम उनको लोड कैलकुलेशंस परफॉर्म करेंगे, ठीक है. सो दीज आर द डिफरेंट नेम्स ऑफ द लाइव लोड, ठीक है. स्नो लोड इज अ लाइव लोड, विंड लोड इज अ लाइव लोड, ठीक है. अर्थक्वेक इज अ लाइव लोड. साइल प्रेशर जो होता है, दिस इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ ए लाइव लोड. अर्थक्वेक प्रेशर जो होता है, साइल प्रेशर इसको आप बोलते हैं. Is this clear? Any question regarding the lecture number 1? No sir. कोई क्वेश्चन है भाई? किसी को कोई क्वेश्चन है तो सर वो बुक बता दें सब्जेक्ट की. हाँ, इसकी रेफरेंस बुक जो है बेसिकली स्ट्रक्चर एनालिसिस बाय हिबलर. एनी लेटेस्ट एडिशन आप इसको कर सकते हैं. हमारे पास 10th भी है, 13th भी है. So any latest edition that you can use for the reference of structure analysis by Hibbeler.
स्ट्रक्चरल एनालिसिस बाय हिबलर में ना सिर्फ सेक्शंस 1 2 दोनों के आते हैं, उसमें हम कुछ चैप्टर्स जो हैं वो सिर्फ सेक्शन 1 में पढ़ते हैं और कुछ 2 में पढ़ते हैं। तो बुक एक ही है, स्ट्रक्चरल एनालिसिस बाय R.C. हिबलर। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ इसमें जो है वो आज CR ने मुझे सी सेक्शंस के CR ने कहा था कि आज हमारा एक वाइवा है फिजिकली यूनिवर्सिटी में, तो लिहाजा कल हम जो है वो क्लास जो है वो एक 12 बजे के बाद अरेंज करेंगे। आज हम टोटल टाइम तो नहीं इस क्लास को दे सके, तो टुमारो इंशाल्लाह आई विल अरेंज क्लास दोनों सेक्शंस की आप एट 12। ठीक है, 12 PM। ठीक है जी, 10 से 12 बजे तक मेरी एक क्लास है, 11:50 तक। तो 12 बजे हम उसको जो है वो शेड्यूल कर लेंगे। कल आपकी क्लास यही वाली दोबारा कंटिन्यू होगी। ठीक है, तो आज जो है वो जो 71 स्टूडेंट्स मैंने CRs को CR, हाँ जी किधर है CR? ये 71 स्टूडेंट्स हैं। यस सर। हाँ दाऊद किधर है? यस सर। हाँ ये मैंने 71 स्टूडेंट्स की आपको ना पिक्चर भेजी है, जी इनकी अटेंडेंस लगाकर विद डेट एंड लेक्चर नंबर 1 ये मुझे व्हाट्सएप कर दें। चलें ठीक है सर। ठीक है ना? ओके। हाँ तो कल फिर इंशाल्लाह 12 बजे आपका लेक्चर होगा। ठीक है, कल इस लेक्चर की कंटिन्यूशन में 12 से ऑनवर्ड हमारा लेक्चर होगा। ओके सर। ओके सर। ओके।